So today we are going to start with the chapter of scale. Before we start with the chapter of scale, I want to ask you guys: have you all completed departure? I believe all of you have completed departure. Studying about departure is a prerequisite for these chapters. Studying convergency is a prerequisite for studying charts. Okay, studying directions and distances on Earth is a prerequisite for the chapter of charts. That is why we have taken this particular flow of the syllabus. Today we are going to start with scale. That is the first chapter. Let us start. What is scale? People usually make scale models of cars, bikes, airplanes. So what is scale? अगर कोई भी चीज़ रियल लाइफ में 100 यूनिट्स है, मैं उसका 1:100 स्केल मॉडल अगर बनाऊंगा तो वो चीज़ 100 यूनिट्स की मैं 1 यूनिट में भी दिखा सकता हूँ अगर मैं उसका एक छोटा मॉडल बनाऊँ. सो दैट इज स्केल. बट हम लोगों ने उसको कितना स्केल डाउन किया है, कितना स्केल अप किया है. You are aware of these terms. If you have shrunken it down by about 100 times, the scale down will be 1:100. Right? कोई डाउट? जब आप 3D प्रिंटिंग करते हो तो आप एक छोटा सा जब इतना इमेज बनाते हो, एक 3D इमेज बनाते हो, फिर उसको आप स्केल अप कर देते हो सो एज टू प्रिंट अ बिगर थिंग. राइट? So that is about scale. Now, how is scale relevant for us pilots? Scale is relevant for us pilots because we use aeronautical charts to fly. Now, aeronautical charts are nothing but a representation of the Earth on a 2D piece of paper. The problem is with charts is that Earth is a 3D sphere, but on the other hand, we are representing it on a 2D surface. It will never be very accurately represented. It will never be very accurately represented on a 2D piece of paper. In order to solve this problem, scale came into the picture. स्केल इज एसेंशियली यार कि यार मेरा रियल लाइफ में अर्थ इतना बड़ा है, मैं उसको इतने छोटे पीस ऑफ पेपर में दिखा रहा हूँ. सो 1 centimeter on the chart corresponds to how much distance on the earth. Let's say all of you have flown here. How many of you are pilots or CPL holders? Chakshu, Piyush, Sparsh, Vedant, right? Atharv, Shreyas, you are going to fly right now. So when you actually start flying, you will go for some cross-country flights. In your cross-country flights, you will have an aeronautical chart with you. In that particular aeronautical chart, it's kind of like a map. How many of you have seen a map? Right? You've seen a map. So when you go there, this is your aeronautical chart. Let's say I'm gonna give you. Let's say this is this position A. This is your home airbase, right? And this is your destination airbase. So what you do, आपके पास चार्ट है, मतलब बहुत यहाँ पे भी एक एयरफील्ड है, यहाँ पे भी एक शहर है, ये सारे शहर है, 4-5 शहर. आप क्रॉस कंट्री के लिए प्लान कर रहे हो. सो दिस इज वन एयरपोर्ट, दिस इज योर होम एयरपोर्ट. सो we in our days we did our flying out of Baramati, right? We did our flying out of Baramati. So हमारे पास एक aeronautical chart था. ये these aeronautical charts are freely available on the EAIP of India. You can download them, print them, or your flying school can give them to you. Now on these charts you have a visual description of the terrain around, the ground features there, the latitude, longitude, okay, and probably man-made obstacles, some towns, cities, villages, forests, valleys, mountains, and so on and so forth. Okay. In Jeppesen charts, especially in charts which are used outside India, which are published by the Europe or by the USA FAA, those charts are even better. Those charts are even better because they also show man-made obstacles, you know, windmills, those things as well. So when we used to fly, यहाँ से आप तक एक हाईवे जाता था. इस हाईवे के बीच में हमारे पास 2-3 टाउन्स आते थे. वो टाउन्स कुछ ऐसे डिपिक्टेड होते थे. यहाँ पे हमारे पास एक डैम आया करता था, ड्रैगन शेप लेक करके हम लोग उसको बोलते थे, दूर में रहता था. यहाँ कहीं पे हमारे पास विंड मिल्स रहते थे, हम लोग वो चार्ट पे मार्क कर देते थे. 2-3 छोटे मोटे शहर भी आते थे. यू हैड रोड इंटरसेक्शंस एज वेल. You had a few rivers coming out like this, coming out like this. On these few rivers, sometimes you had bridges as well. Sometimes you had Y-shaped rivers as well.
तो हम लोग वो वाई इंटरसेक्शन को एक चेक पॉइंट बना देते थे। सो एक पूरा एक विजुअल मैप रहता था। अब हम लोग क्या करते थे, नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, बट ऑन फ्रॉम योर डिपार्चर टू योर डेस्टिनेशन, हाउ मच डिस्टेंस इज इट एक्चुअली देयर? आप गूगल मैप्स पे देखते हो, गूगल अर्थ पे देखते हो, रियलाइज दैट इट इज 116 nautical miles, 116 nautical miles. But here on the map, it is just this much amount of piece of paper. So now let's say when you want to plot your position, don't you think that there should be a relation between the actual Earth and the chart distance? The relationship between the Earth distance and the chart distance is known as scale. So what is scale? Scale is nothing but a ratio of chart distance divided by Earth distance. Clear? What is scale? Scale is the relationship between the length of a line or any 2 points, distance between any 2 points on a chart versus on Earth. Clear? Secondly, this scale can be represented in three ways. What are the three ways? Statement, graduated, and representative fraction. What is a statement scale? 1 centimeter on this chart equates to 1.7 kilometers on Earth. This is a statement. This is a statement. 1 inch to 10 nautical miles. These kind of scales are used in Jefferson charts. So, what will you do? You will take an inch scale, like a foot and an inch scale, with you on your cross country or you're flying. Then you will, on that scale, you'll be like, okay, this is 1 inch. This 1 inch means, yeah, 10 nautical miles. तब मैं वो स्केल रूलर होगा, मैं वो रूलर लूंगा, वो रूलर लूंगा, उसमें 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। ठीक है। अब ये रूलर को मैं, ये फिजिकल रूलर है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख के आई कैन एक्चुअली मेजर। अच्छा, ये इधर है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे कैसे रखा, बारामती के ऊपर रखा। ये देख रहे हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये वाले जगह पे मैंने इसको यहाँ रखा। अब मेरे को एक बात बताओ, वाई शेप्ड इंटरसेक्शन of the rivers is how many nautical miles away from Baramati? 10, 20, 30, 40, 40 पे जाओगे तो it is hitting the river, है ना। 50, 60, 70, 70 पे you have another highway। अगर मैं ऐसे देखूं तो इंटरसेक्शन कितने पे आ रहा है हाईवे का, 60 पे इंटरसेक्शन है हाईवे का, है ना। 70, 80, 90, 100, 110, 110 से थोड़ा पहले, so we can say 106, right? Somewhere over here you are getting it, y-shaped intersection. So this is maybe 106 nautical miles. This is exactly how you use scale in reference to practical flying. Athar and Shreyas, I have taught this for you guys to get you understand a practical example of scale. Clear? Or everyone else here knows it. I hope you have understood it, guys. अब ये स्केल लिखी कहाँ रहती है, ये चार्ट के कहीं एज में लिखी होती है यहाँ पे। So maybe it can be written like 1 centimeter to 1 nautical mile, something like this. ये हो गया statement scale. The next form of a scale is a graduated scale. It is kind of like this. ये आप सब लोगों ने बहुत often देखा होगा, बहुत often देखा होगा। What this basically means is, ये distance is 10. Instead of giving you actual physical distance कि 1 इंच या 2 इंच, ये पता है ये सेम जो चीज़ है ना, ये चार्ट के ऊपर प्रिंटेड होती है। ये जो सेम चीज़ है, ये चार्ट के ऊपर यहाँ पे प्रिंटेड होती है, काइंड ऑफ लाइक दिस। आई विल कम टू यू विद दैट। ये चार्ट के ऊपर यू प्रिंटेड होती है, कुछ यूँ। और यहाँ पे लिख दिया जाता है कि यार दिस इज 10,
this is 20, this is 30. तो बेसिकली या तो तुम उंगलियां रख लो या यू कैन यूज अ थ्रेड. अगर मान लो तुमको एक रिवर की लेंथ निकालनी है, तुम एक थ्रेड लो, वो रिवर को ट्रेस करो, और फिर वो थ्रेड लेके तुम यहाँ पे लगा दो किसी फिजिकल मैप पे, तुमको पता चल जाएगा हाँ कि यार रिवर की लेंथ कितनी. ओके, सो नाउ रिज्यूमिंग विद द क्लास, शेयर्स योर हियर. सो दैट इज अबाउट अ ग्रेजुएटेड स्केल. ये आपको फिजिकली बता देता है कि यार कितना है. अब नाउ लेट्स से तुम लोगों को छोटे वाले यूनिट्स देखने हैं कि हाँ चलो ये 70 हो गया. अब मेरे को एग्जैक्टली प्रिसाइसली देखना है कि ये यूनिट प्लेस में भी कितना है. तो वही थ्रेड लो, इधर रख दो. You will very perfectly be able to see कि यार is it 1 nautical mile, 2 nautical mile, 3 nautical mile, or 4 nautical mile, 5 nautical mile, and 5 का भी units है. So this is 1 units, this is 5 units, this is 10 10 10 units. So it's in multiples also. Got it? So these are the first two primary form of scales. So that's the last two types of scales. And then we have representative fraction. This is the one in which most of the numericals will actually come. Representative fraction is really, really easy actually. Representative fraction is basically a fraction, but it's basically chart length by earth length. CD, chart distance by earth distance. Simple as that. But the catch here is both the units have to be same. Only then it will cancel out. Does this scale have a unit? No, it does not have a unit. It is simply a fraction. If the representative fraction, if I tell you, let's say I tell you the representative fraction is 1 divided by 100. Acha, this is how I write it. Huh? 1 0 0 0 0 0 0. Commas में नहीं देता. I don't like it to be untidy, but this is how I write. So this is a 1:1 million scale. What does this mean? This means that 1 centimeter on Earth is equal to 1 0 0 0 0 0 0 centimeters on 1 centimeter on the chart is equals to 1 million centimeters on the Earth, which means अगर ये दोनों हटा दूंगा तो मीटर्स, और अगर एक दो तीन और तीन जीरोस हटा दूंगा तो 1 2 3 किलोमीटर्स. सो 1 centimeter इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स. क्लियर? इसका मतलब वो होता है कि अगर मैंने मान लो 1 सेंटीमीटर डाल दिया चार्ट पे, या अगर मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, सो अर्थ पे यही डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स. दिस इज द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंड, दिस इज द पर्पज ऑफ स्केल. कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? अच्छा, now which scale is bigger and which scale is smaller? Let us understand this. किन किन लोगों को is the scale larger or is the scale smaller इसमें प्रॉब्लम होती है? स्पर्श, वेदांत, नहीं होती कभी? So now you tell me, अब होगी. Look at this two charts. This is a zoomed out picture of India. This is a zoomed in map of India. In which of these two is the scale bigger? Which chart has a bigger scale? Tell me. किन किन को नहीं होती है प्रॉब्लम? स्पर्श को नहीं होती है, वेदांत को नहीं होती. पीयूष, पीयूष तेरे से बाद में पूछो. After they tell me an answer. Yes. Which chart has a bigger Scale second photo का scale? So this is option number one. This is option number two. second. So you are telling me this इसका scale is bigger. Hmm. Shreyas says this. Which scale is bigger? So first one is bigger. Second one is a smaller scale. The bigger the scale, smaller the actual map or something, and smaller the scale, bigger the picture.
मैंने सेकंड वाला सोचा क्योंकि अगर स्केल बड़ा है मतलब नीचे की वैल्यू छोटी है, नीचे की वैल्यू छोटी है और दैट मीन्स सेकंड 1 सेंटीमीटर में अपने को कम नॉटिकल माइल्स मिल रही है, तो राइट वाला सेकंड ऑप्शन। There's a lot of confusion right here. There's clearly a lot of confusion. तो चलिए देखते हैं कि कौन सा स्केल छोटा है, कौन सा स्केल बड़ा है. Vedant thought it was convincing. Piyush thinks it is convincing. Sparsh is also convinced in a different way. So what is the real deal? What is the real deal? Let's have a look. Ahmedabad to Kolkata, distance 1315 kilometers. Ahmedabad to Kolkata distance 1315 kilometers. Let's take a smaller one. Okay? Let's take a smaller one. Delhi to Nagpur. Let's say about 600 kilometers, 600 not kilometers. Again, Delhi to Nagpur, 600 kilometers. Okay. चार्ट डिस्टेंस किसका ज्यादा है? सेकंड वाले का चार्ट डिस्टेंस जो है So let's say this chart distance is 6 centimeters. This chart distance is 3 centimeters. कोई doubt? Calculate the scale for both the charts. 6 centimeters divided by 600 kilometers. 3 centimeters divided by 600 kilometers. Calculate the scale. फर्स्ट वाले का 1:200 आएगा ना. 1/2000, 1/20 million. Million. मतलब मैं भी वही बोल रहा था 200 तो उसके आगे 5 जीरो. 5. Yes. नहीं 200 के आगे 5 बोल रहा हूँ. मैंने 200 बोला ना. हाँ हाँ. Numerically, which value is bigger? First one. फर्स्ट. I will frame it better. Numerically, which fraction is bigger? फर्स्ट वाला. 1/10 million. होता है या 1/1 बड़ा होता है? 1/20 बड़ा होता है या 1/10 बड़ा होता है? Which is a bigger value? 1/10. Second वाला is बड़ा है भाई. If I give you 1/10 of a pizza or I give you 1/20th of a pizza, which is bigger? 1/10 is bigger. This is a bigger scale. Clear? Okay, Vedant? बट मेरा लॉजिक भी सही है ना. मतलब बड़ा जो नंबर है 20 मिलियन जो आया उससे छोटा ये मैप बनेगा और छोटा जो नंबर है 10 मिलियन उससे बड़ा ये बनेगा. ठीक है. सो इसका हम लोगों ने क्या निकाला? 1 डिवाइडेड बाय 20 मिलियन clearly, and this is 1 divided by 10 million clearly. Which is the bigger scale? This is the larger scale. Look at this particular diagram or this particular chart. When the scale is large, the fraction is bigger. Numerically, this fraction is bigger. 1 divided by 10 million will be a fraction which will be bigger. Then
it will have a smaller denominator. नीचे वाली value जितनी कम उतना बड़ा fraction. This kind of a chart has a lot of details. It's a zoomed in view. A larger scale means it's a zoomed in view. Lots of details. Clear? Pakka? And smaller scale, smaller fraction, denominator is bigger. Lots of area, less detail. So, larger scale बड़ा बड़ा दिखेगा, वेदांत स्मॉलर स्केल छोटा छोटा दिखेगा. बहुत सिंपल. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? No? Do you want to do numericals? Let's do numericals. Now, before you do numericals, I hope all of you know this bullet that I had taught the other day in class. How many of you know the unit conversions? How many of you know unit conversions? किस किस को unit conversions आते हैं, किस किस को नहीं आते? नहीं आते हैं तो सीख लो once and for all. Athar, you will tell me the values. Nautical miles. Nautical miles is the primary. It is the primary distance measuring equipment in aviation. Now we can take it into SI units, which is the standard international units. We can also take them into imperial units, which is the feet and the inches. So if I were to convert the nautical mile into meters and kilometers, I'm going to straight away convert it into meters, actually, not even kilometers. Because if I'm telling you about meters, you can very well understand what kilometers is, okay? I don't have to tell you. If I have to convert it into meters, you are going from a bigger unit to a smaller unit. When you're going from a unit which is bigger to a unit which is smaller, the magnitude will become bigger. हमेशा याद रखना. 1 nautical mile and 1852 meters. Unit छोटा हो गया तो नंबर बड़ा हो गया and vice versa. हमेशा याद रखना. This will help you understand कि यार मेरे को multiply करना है, divide करना है. तो अगर मैं nautical mile से meters पे जा रहा हूँ, यूनिट छोटा हो रहा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा. सो आई विल मल्टीप्लाइड बाय 1852. अब ये मीटर्स से मैं जाऊंगा सेंटीमीटर्स पे, मल्टीप्लाइड बाय 100. इसी चीज को अगर मैं फीट में जाऊं, विच इज माय इंपीरियल यूनिट्स, विच इज फीट 6080. ठीक है, 6080 मल्टीप्लाई, and from feet I'm going to inches, multiplied by 12. Now, if you have to convert the units amongst themselves, how many feet is equal to a meter? तो मीटर से छोटा यूनिट कौन सा है? फीट वाला है. तो जब आप 1 मीटर पे कितने फीट होते हैं? 3.28. Okay, so now meters to feet, meters to feet. Okay, so now to restart it. Meters से अगर आप feet पे जाएंगे, so feet is the smaller unit, meter is the bigger unit. In 1 meter we have 3.28 feet. Inches से अगर आप सेंटीमीटर पे जाओगे, centimeter is the smaller unit, 2.54 is the value. Go to, okay, multiplied by 2.54. With the help of these values, let's just do a few of these numericals, shall we? जब भी अगर आपको इनको ये सब सॉल्व करना है ना, वो देखो बहुत सिंपल है. Here we have a number of sums. We have about 6 sums. I will do any 2 for you. Tell me which do you want? Which 2 do you want me to do? Choose any 2. टू सिक्स कर दो. Piyush, everyone okay with 2 and 6? Anyone wants to do 4 and 6 or 5 and 6? चलो, let's do 2 and 6. पढ़ लो, मतलब ऐसे 5 and 6. 5 and 6. 5 and 6. 5 and 6. Others? तो फिर 2 5 6 ही कर लो. 5 6 कर लो. On a chart, 14.8 centimeters represent 20 nautical miles on ground. See,
When I read this question, I will like on a chart, this many centimeters. Centimeters, I know what chart distance. What is this? 20 earth distance, no problems on the ground. So simple. Whenever I get two of these values, no, I'm removing this bullet. Has everyone copied down this bullet? Great. हमेशा याद रखना chart distance upon earth distance is equal to scale. Now, always remember in the exams, you will be given chart distance. You can be given it directly, you can be given it indirectly. अर्थ डिस्टेंस तुमको डायरेक्टली भी मिल सकता है, इनडायरेक्टली भी मिल सकता है. इनडायरेक्टली कैसे मिलेगा? तुमको अर्थ डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं देंगे, तुम लोगों को देंगे दिस मैनी एट दिस स्पीड फॉर दिस मैनी मिनट्स, 5 मिनट्स एट 185 नॉट्स. डिस्टेंस निकाल लो, ऐसे तुमको अर्थ डिस्टेंस मिलेगा. सेकंड वे तुमको अर्थ डिस्टेंस कैसे मिल सकता है? डिपार्चर का फॉर्मूला से. यू ट्रैवल 10 डिग्रीज ऑफ मेरिडियन एट 44 डिग्रीज नॉट. चिलोंग दे देंगे और लैटिट्यूड दे देंगे, तो तुमको डिपार्चर की मदद से अर्थ डिस्टेंस मिल सकता है. So these are the two ways by which earth distance will be there given mentioned in the question, but छुपा हुआ रहेगा, especially in the Mercator chart numericals. Am I clear? Now, let's start. Chart distance is given 14.8 centimeters, 20 nautical miles. 20 nautical miles. What is the scale? Now, always remember, हम लोगों को कुछ value ऐसे निकालनी है. टक 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 टक. Right? So I do not personally like to calculate it chart distance upon earth distance. मेरे को calculation ऐसे करनी नहीं पसंद, क्योंकि फिर मेरे को मालूम है आई विल गेट 1 अपॉन एक्स. बेसिकली मेरे को एक्स वाली वैल्यू निकालनी है ना. द वे दैट आई लाइक टू डू कैलकुलेशंस इज आई लाइक टू डू इट द अदर वे अराउंड. Instead of writing chart distance upon earth distance, I like to do the calculation like earth distance upon chart distance. Why? Because then I will get x as the value on my calculator divided by 1. I like to do it the other way around. अगर तुम 14.8 को 20 nautical miles से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर पे तो सही से चलेगा नहीं. चलो, so let's start. 20 nautical miles, and this is the chart distance. Scale कितनी हुई? Give the chart scale as a representative fraction. ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैं लिखूंगा भाई. कैलकुलेटर में जाऊंगा मैं, 20 देखूंगा, 20 लिखूंगा. नॉटिकल माइल्स है, इसको मैं सीधा कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर्स में. नॉटिकल माइल को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? 18520 से मल्टीप्लाई. मैंने 1852 डाल दिया मीटर के लिए, 00 सेम में डाल दिया. आई डोंट लाइक टू डू नंबर ऑफ स्टेप्स. पीयूष, आई डोंट वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके, नाउ ये हो गया. मेरे को मालूम है इसको मेरे को 14.8 से डिवाइड करना है. सीधा लो 14.8 से डिवाइड करो, क्या वैल्यू आ रही है? So 2,50,000. 250 decimal 270. डेसिमल कैसे आ रहा है इसका? 272 वो कॉमा है. Comma, sorry, my bad. 2,50,000. इसको उठाओ, 15 पकड़ो और इसको बना दो 4/3. 1.3 हो गया है ना. 1.3 हो गया. कुछ नहीं, 18520 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो. एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन बहुत बढ़िया काम. क्या किया हमने, फिर से बताओ. This is not for you. This is not for you. This is for airline days. I am approximating 14.8. मैं इसको 14.8 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये 15 है. 15 मतलब 20/15 कितना होता है? 4 divided by 3, that is 1.33. अगर एग्जाम में मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मेरे को अप्रोक्सीमेशन करना है, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 18520 मल्टीप्लाइड बाय 1.3. क्लियर? एनी डाउट्स? कितना आया वैल्यू? 50 कर लो. 250,270. 2,50,270. 2,50,272. 250,272. Sorry. हैबिट डालो. ये हैबिट मैंने अपने लिए ली है ताकि मैं सम्स फास्टर सॉल्व करूं. तुम लोगों को भी यही हैबिट डालनी चाहिए. क्लियर?
Determine the length in inches on this chart. मतलब ये क्या पूछ रहा है हमसे? Chart distance पूछ रहा है. Which would represent the distance flown by an aircraft in 9 minutes at a ground speed of 185. So basically अभी मेरे को scale दिया हुआ है और मेरे को earth distance दिया हुआ है. Earth distance क्या है? 9 minutes at what speed? 185. Ouch. अब क्या करें? Let's understand a faster way of doing it. कैसे करोगे? Distance is equal to speed into time. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे. कैसे करोगे? A normal person would do 9 multiplied by 185 divided by 60, correct? Piyush, you would do the same. What would you do? मैं इसका क्या करूंगा 6 मिनट्स में देखूंगा 118.5 आ गया तो क्या हुआ 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये नंबर्स को ब्रेक नहीं करना है। बाद में मेंटल मैथ करो। कैलसी तो शायद यही करूंगा जो आपने किया कैलसी में भी करेगा, घंटा ये नहीं। अथर सीख ले। 9 मिनट्स है ना, तो 0 डिग्री 9 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 180 डाल। वही वैल्यू आई जो उससे आती 9 into 185 divided by 60। क्लियर? सर ये पीयूष का कुछ तो करना पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे कैसे पैदा हो गया सर? ये ऐसे कैसे पैदा हो गया? ये उल्टा पैदा हुआ है सच्ची। ये नंबर सी को ब्रेक कर रहा है, 9 को 6 कर दिया भाई। मतलब बाप रे, डीजीसीए वाला अगर स्टेप्स मांगता ना, बाप रे, तो पागल हो जाता बंदा। और तू 6 के लिए क्यों निकालेगा? 10 नहीं है क्लोज, इसको 6 से डिवाइड करना कितना आसान है। इतना भी नहीं भाई, तो इसको 20 से डिवाइड कर। बेस्ट है 20 से डिवाइड। 180 by 20 कितना? 9 हो गया 180/20 27 वरना मैंने तो क्या किया था अगर मेंटल 10 से डिवाइड करके 18.5, फिर उसमें तू नॉट ऐड करेगा क्योंकि वो 18 का हाफ होता है। साले डायरेक्ट करना। व्हाट द पॉइंट? नाउ लेट्स गो टू। अच्छा ये सेम है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 सेम, एग्जैक्टली सेम है। ये वाला भी सेम है। You'll do this on your own now. This is the same fucking numerical, man. Number 6 is the same numerical. Okay. However, this is not all that is there. More elaborate work on the scale type of numericals will be there in the Mercator charts chapter and in the Lambert's chart chapter. Clear? Any doubts in the scale chapter? No? End of this chapter. Class